Welcome to Eyeway Encounters. The request would be that all of you who have logged in, please keep yourself on mute. If possible, if your bandwidth allows, keep your videos on because it's nice to see faces. So the topic today is an interesting one, and our guest today is an even more interesting person. So let me first introduce the topic. It's about, I presume most of you are working in banks and have aspirations within the bank. You're looking at opportunities of growth. You're looking at opportunities of training, maybe. You also probably would like to know the rules under which you all work. So that is one. Our speaker will introduce the topic and he will make an introductory remarks, which could go on from anything from 15 minutes to 45 minutes. And then, you could, as the speaker suggested, you could put down your questions on the chat box, or you could press Alt-Y, which will indicate that you would like to ask a question. And when the question time happens, our colleagues Salil Jhandial from Bombay, he will kind of moderate the questions. So he will unmute you and request you to ask the questions. Let me introduce the speaker for today. Speaker is Dr. Ashwini Agarwal, a dear friend and of many years. And he has been working with the Punjab National Bank for many years. He's worn different hats. He is right now the Assistant General Manager, Credit Monitoring. He's also spent a lot of time in personnel and training. In between, he was briefly, for a period of a few years, seconded to the National Association for the Blind, which he headed for that period. And he's been with the bank for several decades now. I would leave it to him to tell you the exact dates. But he's been a professional. He's one of those people, when you want to look at careers in banking, he's one of those people who is got a very wide understanding of the space. And we are privileged to have him on the show today. Thank you, Ashwini, for agreeing to be with us today. And so, Ashwini, you can speak for as long as you want, maybe 15 minutes, half an hour, 45 minutes. And people will start asking you questions. And as I had mentioned, they would either put the questions in the chat box, which Salil will read out for us. Else, they will put up their hand and as and when appropriate, they will be unmuted and they can ask their questions. So welcome, Ashwini, and the floor is yours. Thank you, George, and I'm really grateful to the opportunity that has been given to me. And we always want to share what we have got in our life. So I lost my sight when I was around 13, and at that time, the world was totally dark. So under the circumstances, what I thought was what to do. So the solution that came to my mind is to make what best I have and focus on what I have. And let me see how the things go on. And this theory really helped me a lot to keep empowering myself. So I completed my 10th in 1979 and went on to complete my class 12 in 1981. Did my graduation in economics honors from Venkateshwara College in 1984. Then I thought of doing what to do. Then try for two things. One was for MBA or MBE. So I went on to do my master's in business economics from South Delhi campus. So thereafter, I had to take a decision what to do. Went for the jobs, a lot of places. And under the circumstances, I'm talking of the year 1986. So that's around 14 and 22. That means around 36 years back. And at that time, technology we were dependent on recorders, and I had picked up Braille also very well. And at that time, I took up the training regarding mobility also. So I was pretty independent in Braille, mobility, and things like that. But still,
it was a challenge to find an opportunity. So under the circumstances, I thought of giving examinations for banking as well as government jobs. So luckily, my hard work paid off. George, can we mute? Yeah, that's what I'm looking at. Also, you might want to do a mix of Hindi and English. I shall do that. Thank you. Yeah. Okay. And I will locate this unmuted person and mute him. Okay. सो जैसे जॉर्ज ने कहा कि अब मैं हिंदी में भी शेयर करूं, क्योंकि हमारे साथ बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो हिंदी में सुनना चाहेंगे। तो 1986 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने कंप्लीट कर दिया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, MBE कंप्लीट कर लिया था। तो जॉब के लिए जब मैं ढूंढ रहा था, तो अंडर द सर्कमस्टांसेस क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, आई स्टार्टेड विद द स्टेनोग्राफर्स ट्रेनिंग। Oh, that was very good. उससे क्या हुआ, braille skills started improving, reading skills improving, vocabulary improving, and opportunities opened up. And I started giving the different examinations, and staff selection commission में, PNB में, और Oriental Bank of Commerce होता था, उन सबके examinations clear हो गए, and ultimately I decided to join the Punjab National Bank way back in 1987. So जैसे ही ज्वाइन करा तो उसके अंदर ऑप्शंस रहते थे कि अब यहाँ से कैरियर ग्रो करना है। सिचुएशंस ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्लरिकल में ही रहते थे और क्लरिकल में ही रिटायर हो जाते थे। एंड आई थॉट ऑफ गोइंग टू द ऑफिसर कैडर। सो दैट इज हियर आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू बिल्ड योर कैरियर। Then from 1987 as a stenographer I started off, and how I went off to move towards the officer cadre, the struggle I had, and from there to manager, senior manager, chief manager, and AGM. I will share whatever experiences I have, which I feel are very important for you to learn and get hold of. So the first thing that is very important when you get into the banking industry, which I did, luckily I was guided very well to do my JIB and CIB. At that time it was CIB part 1 and part 2. So that is a very good decision. Number one, you get increment, which is almost like a small promotion. Second thing is, when you have to get yourself promoted from the clerical to officer cadre, so there are 15 marks, that is 6 and 9, 15 marks advantage that you get over other candidates. So that's very important. The moment we enter into banking industry, we should strengthen ourselves, and whatever we want to do, the first and the foremost thing is that we have to focus on JIB and CIB. तो JIB CIB के ऊपर अपने को फोकस करो। कैसे करना है उसके लिए, चाहे आप NAB या और ऑर्गेनाइजेशंस पे देखोगे, काफी मटेरियल अवेलेबल है, टेक्स्ट फॉर्म में भी है, ई-टेक्स्ट में भी है, ऑडियो में भी है, एंड लॉट ऑफ यूट्यूब में वीडियोस भी हैं। स्टार्ट लुकिंग। जैसे ही आप JIB CIB करोगे तो आपकी जो बैंकिंग की अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल इंप्रूव, एंड बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स बेटर होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स हाउ आई वेंट ऑफ। Excuse me, Ashwini, ये CIB और JIB का full form क्या है? I'm sure the bankers in the platform will know it, but maybe you could just tell us. Okay, JAIIB is Junior Associate of Indian Institute of Bankers, and CAIIB is Certified Associate of Indian Institute of Bankers. So Government of India has put up Indian Institute of Banking Finance, IIBF. It is in Bombay, headquarters in Bombay. They have put up courses. So out of them, these two courses, JIB and CAIIB, if we do these two courses, so in clerical you get 1 increment for JIB, and CIB you get 2 increments. But in officer cadre you have 1 increment for JIB and 1 increment for CAIIB. So getting 1 increment throughout your life has a positive impact. Plus, as I said, for your promotion avenues also. So it has got marks, it has got values, and whenever you face any board interview, so one of the most important question is whether we have done JIB, CIB. If we have done it, so that's a very positive sign. The chances of alleviation is much more better. So number one thing that is very important is continuously strengthen yourself to do JIB, CIB with
top priority on it. Second thing which I would like to share is there are other courses also that IIBF offers. Depending on your interest, you have to learn towards them. In banking industry, 2-3 things are very important for you to understand. Number one is keep reading about economics. Whatever in the Indian economy is happening, strengthen yourself. And second thing is you have to strengthen your computer skills. In the present banking, it is highly digitalized. Especially, I would suggest 2 areas to strengthen very much for yourself is Excel and MS Word. The more skills you have regarding Excel, your utility in the banking industry would dramatically be there. Especially with the visual impairment, the strength in the Excel, if you have, that will help you to do a lot of good things. And second is MS Word. If you can mass mailing, merging, a lot of understanding, good writing skills. So this will help you to help effective communication within the bank. So bank being a service industry, it is dependent on 2 things. One is the processing of data, and for that Excel is very important. They have to monitor the credit, they have to monitor how much the deposit is growing, they have to monitor how the credit is extending, how the branches are performing. The entire calculation of data is very important for managing the banks. Similarly, for communicating with the customers or communicating with the regional officers, with the circle officers, with the zonal officers, with the head office, and especially with the customers, if you have got the skills to communicate well, so definitely our utility improves. So this is one area. Second area, first is JIB, CIB. Second is Excel and MS Word. Third thing which I feel is very important are communication skills. हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ऊपर अपना अधिकार बढ़ाने के ऊपर काम करें. आप अच्छे से हिंदी में भी बोल सके और आप अच्छे से अंग्रेजी में भी बोल सके, उसके ऊपर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना होगा. सेंटेंसेस जैसे कहते हैं कि अगर आपने कम्युनिकेशन में इफेक्टिव होना है, जैसे मुझे लगा किसी से बात कर रहे हैं, यस यस सर, एक ही ऑप्शन है. सेकंड ऑप्शन है पहली बार बात करी यस सर, सेकंड बार ओके सर, तीसरी बार आई एग्री सर. सो ये छोटे छोटे कम्युनिकेशन टिप्स हैं. आई थिंक जॉर्ज वुड बी इन अ पोजीशन टू टिप इन सम ऑफ द गुड थिंग्स एज वी कम्युनिकेट विद अमंग आवरसेल्व्स, बिकॉज़ एनएबी में जिस तरह से बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स जॉर्ज सिखाते थे, मैंने जब मैं वहां पर था, और ही यूज्ड टू कम एंड these are very small very effective tips which you must have. और एज अ बैंकर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, एक्सपोजर दो. यूट्यूब में बहुत चीजें अवेलेबल हैं, रीडिंग करो, एक्सटेंसिव रीडिंग करो. जैसे जैसे हम रीडिंग करेंगे, द मोर रीडिंग वी डू, our horizon of thinking improves, analysis improve, and become a good listener. So communication skill is not about saying, the communication skill is listening. जब भी कोई बात कहता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं अगर मेरे सीनियर ने मुझे बुलाया तो मैं बगैर अपनी ब्रेल स्लेट और स्टाइलस लिए उसके पास जाऊं. मेरे पास हमेशा अपना ब्रेल स्लेट और स्टाइलस होगा. जो भी पॉइंट्स वो बोल रहे हैं या कोई मीटिंग हो रही है, मैं जरूर ब्रेल में अपने पॉइंट्स नोट करूंगा. सो ये एक स्किल है कम्युनिकेशन, जो शो करता है कि सामने वाले की बात को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, उसके पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहा हूँ, और हमेशा मीटिंग छोड़ने से पहले तो हमने किस किस पॉइंट्स पे एग्री किया है वो मैं शेयर करूंगा. सो ऑटोमेटिकली एक इमेज जो बिल्ड होती है सामने वाले के कि या ही इज काम, ही लिसन्स, ही एनालाइजेस एंड ही डिलीवर्स. अगेन, ही लिसन्स, ही इज काम एंड ही डिलीवर्स. सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम अपने अंदर डेवलप करते हैं और ये इमेज बिल्ड करते हैं. कहते हैं कि जब भी मेरा ट्रांसफर होता था या भी मैं जानने वाला होता था, तो उससे पहले मेरा जो इमेज है वो वहां पहुंच जाता है. सो ऑटोमेटिकली हमारे प्रमोशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. जहां पर भी मैं गया, नॉर्मली हर पॉइंट पे हमें प्रूव करना पड़ता है. ये सिर्फ मैंने देखा है, मेरे साथ ही नहीं है, जितने भी और डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हमें पता नहीं कैसे ऐसा महसूस होता है. मैं फिर वो कहूंगा, वी फील कि हर जगह हमें प्रूव करना पड़ रहा है.
प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है? द पर्सन्स विद हूम वी आर डीलिंग, जिनके पास डिसेबिलिटी नहीं है, वो बिलीव नहीं करते कि विदाउट साइट बहुत कुछ किया जा सकता है। या मान लिए वन आर्म पर्सन है, वो बिलीव ही नहीं करते कि एक हाथ से कितना काम कर लेगा, या लेग अफेक्टेड है तो कितना काम कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। दैट दे डोंट बिलीव इन इट, सो ऑटोमेटिकली व्हेन दे डोंट बिलीव इट, सो दे डोंट एग्री। उनके दिमाग में यही होता है कि ये भी कम ही कर पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट वी से, मैंने ये चीज पाया। सो पीपल डोंट फॉलो व्हाट वी से, पीपल विल फॉलो व्हाट वी डू। जब हम चीजें करना शुरू कर देते हैं, कीप ऑन डूइंग व्हाट इज पॉसिबल, स्लोली एंड ग्रेजुअली द होराइजन वाइडन्स। शुरू में मैं छोटे से कुछ एग्जांपल्स का एग्जांपल करूंगा। जब मैं एज ए स्टेनोग्राफर बैंक में ज्वाइन करा, तो एक फैक्स मशीन थी। उस फैक्स मशीन को मैं कभी कभी देखता था कैसे ऑपरेट करते हैं। तो एक बार उसको जरूरत पड़ गई फैक्स मशीन करने, तुम कर लोगे? मैंने कहा मैं कर लूंगा। मैं गया, मैंने ऑपरेट करके कर ली। अच्छा, ये तो फैक्स मशीन भी कर लेते हैं। टाइपराइटर के अंदर जो हमारी टाइपराइटर थी, पहले जो टाइपराइटर में कर रहा था, यार ये दूसरी टाइपराइटर इस पे कर लोगे? मैं कहा थोड़ा सा ट्राई करके कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दो कौन सी कीज कहाँ पर है। तो उसने बता दिया, थोड़ा हेल्प किया। उसके बाद वो अरे ये तो ये वाले टाइपराइटर पे भी कर लेता है। इस तरह के थॉट्स आते हैं। शुरू में कंप्यूटर्स मुझे हाथ नहीं लगाने देते थे, ये कंप्यूटर खराब कर देंगे। तो जब भी मैं कभी कंप्यूटर के पास जाता भी था, तो कोई ना कोई बहाना करके मुझे वहां से बुला लेते कि मैं छू के भी ना देख लूं कैसा है कंप्यूटर। तो अल्टीमेटली आई हैड टू बाय माय ओन लैपटॉप एंड कैरी इट टू द ऑफिस एंड उसको ऑपरेट कर रहा हूं। जब मैं ऑपरेट कर रहा हूं तो सारे लोग आके देख रहे हैं, अरे ये तो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, तो बैंक का भी कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। अच्छा, फ्लॉपी वगैरह कैसे सीधी करोगे? मैं बता दूंगा इस तरह से। जैसे कैसेट के अंदर मैं देख लेता हूँ कि जहाँ स्क्रूज है वो ए साइड है, जहाँ स्क्रूज नहीं है वो बी साइड है। इसी तरह से फ्लॉपी का भी मैं पोजीशन देख लूंगा अगर उसमें ये डालना है। हम आई एम टॉकिंग ऑफ दोस कंप्यूटर, उस समय फ्लॉपी डाली जाती थी कंप्यूटर्स में। तो उसके टॉकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी, प्रोटॉक होता था या टॉक बैक, तो वो सब चीजें करने के बाद धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि हाँ ये कंप्यूटर्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। फिर जब मैं आगे गया तो सबसे पहले जब क्लास के लिए, तुम क्लास कैसे मैनेज करोगे, बोर्ड कैसे मैनेज करोगे? तो देन आई थॉट ऑफ कि हाँ कैसे मैं बोर्ड मैनेज करूंगा, कैसे चीजें करूंगा। देन आई डिस्कस्ड विथ माय सीनियर। उसने कहा कि पावर पॉइंट करोगे, एक ने कहा। तो मैंने फिर पावर पॉइंट से करा। तो फिर उसने मेरे से कहा कि पावर पॉइंट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे इफेक्टिव ना, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और उस कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू तुम जो क्लासेस लेते हो उसको ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। सो व्हेन आई टेक क्लासेस, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि फ्रेंड्स, व्हेन आई एम टीचिंग, आई विल यूज द व्हाइट बोर्ड एंड द व्हाइट बोर्ड विल बी विद ऑल ऑफ यू। मैं ये कहता था कि आपकी जो कॉपी है ना, वो मेरा व्हाइट बोर्ड है, और जो पॉइंट्स मैं डिक्टेट करूंगा वो अपनी अपनी नोटबुक्स में आप उसी पॉइंट वाइज लिखोगे। तो एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे, दूसरा ऑडियो विजुअल हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं पॉइंट्स हैं वो आपकी कॉपी में, आपकी पेपर पर लिखे जा रहे हैं। सो वी हैव टू इनोवेट कॉन्टिन्यूअसली। तो ये सब चीजें करने के बाद आई गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फैकल्टी। देन आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स आल्सो। मैंने ये देखा कि ये एक एरिया है जिसके अंदर फोकस इस पे करना कि क्या मैं कर सकता हूँ, फोकस व्हाट आई कैन डू। सो आई स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल इन द बैंक मैगजीन। जब मैं बैंक मैगजीन में लिखने लगा, अरे आर्टिकल बहुत अच्छे, डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंट मुझे चारों तरफ से आया। तो कोई भी आर्टिकल लिखना है या कोई भी चीज लिखनी है, तो उसके बाद एक स्मॉल मैगजीन शुरू करनी थी। तो जोनल मैनेजर ने मुझे बुलाया कि मैं चाहता हूँ एक मैगजीन, मैंने तुम्हारे आर्टिकल पढ़े हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो ये मैगजीन चला सकते हो? मैंने कहा सर छोटी से शुरू करें, सिर्फ एक पेज के मैगजीन से शुरू करें। तो ऑलवेज स्टार्ट बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना क्रिएट करके स्मॉलर एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करो और डू बेटर देन दैट। तो उससे एक इमेज अच्छी होती चली गई। ही बिकेम वेरी कन्विंसिंग। तो उससे क्या हुआ, जब प्रमोशंस के लिए रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, तो यही जनरल मैनेजर्स, यही जनरल मैनेजर्स के ऊपर जो हमने इंप्रेशन छोड़े थे, उसने हमारी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा रोल प्ले करा। एक और मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि क्या करना है जिससे कि हमारी कैरियर ग्रोथ हो। अब मैं जब नोट्स बनाता था एज एन ऑफिसर, नोट बनाकर मुझे मान लो जीएम के पास नोट लेकर जाना है, तो पहली बार लेकर गया तो बहुत डांट पड़ी। तो मैंने फिर स्टडी करा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये जीएम ही खड़ूस है, तो ये ठीक से देखता ही नहीं है।
मेरी थॉट थोड़ी डिफरेंट है. मैं हमेशा क्या सोचता हूँ कि जैसे जीएम है बहुत अच्छे हैं, अश्विनी अग्रवाल तूने सोचना है कि तूने क्या करना है. तो मैंने फिर स्टडी करना शुरू करा कि ये कब नोट को अप्रिशिएट करते हैं, कब क्या सिचुएशंस होती हैं. तो मुझे ये मालूम पड़ा कि सर का जब मूड अच्छा नहीं होता ना, तो उस समय नोट लेके जाओगे, जो कितना भी अच्छा नोट लेके जाओ, इट इज गोइंग टू बी थ्रोन इनटू ट्रैश. One sec, Ashwini. There have been some requests for English. So, Sure. So I was wondering whether you could stick to more of English and less of Hindi, because most of the people are bankers, so I guess they would all understand English. I shall do that, and I will try to be very simple English. I hope you are in a position to capture what exactly I am looking at. So that GM, rather than telling that there is some problem with that general manager, I thought, let me work on myself. So after doing my studies, I could realize that that GM, when his mood is good, definitely he will appreciate the note. Otherwise, he will put that in the trash. So how to find out the mood? The best thing was get in friendship with the personal assistant of that GM. So I made an intercom to that. But tell me, friend, develop the friendship. Whenever the mood is good, just let me know. So I used to prepare my note and wait for the time when his mood was good, and used to take the note. And I always have, sir, Dr. Ashwini Agarwal ke notes na kya hote hai yaar, padha karo, bahut अच्छे होते हैं. They are really good. That's how, started complimenting. So you understand what exactly the attitude is. If we look at our own attitude, we will understand what exactly attitude, and you understand. Everybody says attitude make ko positive banao, attitude ko अच्छा करो, but you have to understand what attitude is. Concept पकड़ो basically. तो उसके अंदर हमारे 3 चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती है. किसी भी इंडिविजुअल का एटीट्यूड देखना है तो उसका इमोशंस कैसे चलते हैं, उसका बिहेवियर कैसे चलता है, एंड उसका परसेप्शन कैसे चलता है. इफ यू A is affective domain, B is behavioral domain, C is cognitive domain. So affective, emotions, B is behavior, uska habit, C cognition, how he looks at things. So if we look at these 3 things, so you will understand the attitude of the person with whom you are dealing. And simultaneously, if we look at my own attitude, so I have to match my attitude with the attitude of that person. What he is doing is not in my control, what I am doing is in my control. तो मैं उसके ऊपर ही फोकस कॉन्टिन्यूसली करता हूँ. एंड अनदर थिंग इज, मैं अपने को बार बार ये बोलता हूँ, डिस्कस अबाउट सॉल्यूशंस. जितना ज्यादा तुम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे. लॉट ऑफ पीपल विल टेल मी कि यार जब तक तुम प्रॉब्लम समझोगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे लाओगे. तो मैं कहता हूँ जब मैं सॉल्यूशन ढूंढने निकलूंगा तो प्रॉब्लम को भी समझ लूंगा और सॉल्यूशंस दिखेंगे, एंड आई विल चूज द बेस्ट आउट ऑफ द सॉल्यूशंस. सो ये चीजें ऐसी थी जिसने मुझे कैरियर में बहुत हेल्प करा. जब भी मैं चैलेंजेस फेस, आई डोंट यूज द वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मली, मैं यूज वर्ड करता हूँ चैलेंज. तो चैलेंज हेल्प्स अस टू ओवरकम. सो व्हाटएवर वी थिंक टर्न्स इनटू वर्ड्स, and whatever we speak turns into our thoughts. See, if I keep on telling Ashwini, here is a challenge, you have to overcome it. So the moment I start using the word overcoming, the moment I use the word empowering, my thinking also goes that way. So we can do the engineering of our thinking by choosing the right words and practicing the right words. So when I practice those right words, they have helped me. A lot of wrong words which I used to use earlier, and which I studied on myself, and then I realized these are the weakening spots for me. So these words, using like any abusive language, brings me down. So I made it a point not to use any abusive language anywhere. So continuously my growth is there. All the good thoughts, fill myself with the good thoughts, and keep blessing. Even somebody harms me, initially I feel hurt, I feel like kicking that fellow, but certainly I will reconcile myself very soon and see to it that I maintain my calm and start blessing that fellow. Because I always believe the other person can read me through. If I can read the other person with his voice only, definitely he has the sight also to look into me. If I am thinking negative about a person, the moment I enter his room, he's definitely going to read it, what Ashwini is thinking. So I made it a point to create a thinking such that I am thinking good about any boss I have, any sort of boss I have. I always think, yeah, he's a nice guy.
he has these qualities. I'll always discuss with myself, think about all the good qualities he has, so that, that gets reflected in my aura. So with the result, what has happened is, most of the people with bosses with whom people could work easily, I was very comfortable. And that helped me a lot. And that's how, whenever I prepared for my examination, another thing very important, friends, is while doing for the examinations, people collect lot of material. What I do is I pick up the best book, and throughout all the rest of in my computer, what I will do is I will pick up the best book that is available for promotions. 5-10 books usually come in the, and put it on my computer. Rest of the books I delete, and I thorough that book with me. And how I do it, every question, sometimes the MCQs are there. MCQs, the question is there, then the choices A, B, C, D, E are there. So which is the right choice? I just keep that. Rest of the choices I delete, and I read it time and again. What is the question and what is the right answer? So that is the conditioning that I get. The moment I read the questions, what would be the right answer? That becomes a practice. And when I do it for 2 months, a month or two, when I go for the examination, most of the examination I've been in a position to be the topper in the banking examinations. And the main crux in that is, choose the best book and thorough it out, rather than choosing 10 books and doing here and there and keep haunting. So you will end up nowhere. And just with one book, you would be landing up a lot, and do the most important chapters first, from which the examination normally come. What I found is, as we go higher in the more analytical aspects are covered, fine tuning is done, and RBI guidelines are very important to go through. And another thing, what I do is, whenever I go through a circular, I have a file as ff.txt on my desktop. So I put it at a fatafat file. So what I do is, whenever I'm reading a circular, any point good, I will definitely write it in that file. Any thought that comes to me good, so immediately ff.txt should be open with Alt Control F, and immediately I will just put those words over there. And slowly and gradually, when it becomes a part of personality, I delete it and continuously add good things about it. If you read the circular with the objective of writing the important points, you don't have to memorize the circulars. You will find you have a better understanding of the circulars. And if you are aware about the circulars, if you are aware about how the things are to be done, if you are well versed with the technology, if you have the good communication skills, that is very important. Promotion will be coming automatically. Promotion doesn't come, I personally feel promotion doesn't come with the last moment work. Promotion comes with the continuous. Even the dress that I wear daily, I really focus on the color combinations, and I see to it that even my trousers and my stocking colors are also same. And the shirts, to look taller, the stripes, shirts with the stripes, and the shirts with the colors which are brighter. I don't use off-white color, which is the dull colors. I always prefer using the brighter colors that reflects the positive mind that I have, that I carry with me. So these are the brief things, George, I thought let me start off with. And I think with the questions, I would be in a position to put things in a more orderly fashion. And George, I would request you also to put in some points regarding personality and communication. That is very important for bankers.